Hello, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you for making it here on a Sunday morning. A very, very good morning. I hope you're doing great Sunday morning and Saturday evening, wherever you're joining us from across the globe. Yeah? Okay. So, today's session, Yoga for Stress Management, we will be looking at two aspects of it, the theoretical aspect as well as the practical aspect. Okay. Am I audible enough or should I be louder? No, Yeah, audible? Great.
Yeah, I was saying that we will be looking at two aspects. One would be the theoretical aspect, and the second would be the practical aspect, where we would be practicing asanas and pranayams. Okay, so blindly just saying ki four asanas for stress, four asanas for this doesn't make sense to me. It is important to know the background of why you should be practicing this asanas. Okay, so the first half an hour would be about understanding the theory. The next 45 minutes we would be practicing, and the last 15 minutes I will conclude all of it together. Okay, so starting with sharing my screen here, just let me know if you can see it. Yeah, I think this should be visible now on full screen. Okay. So the topics that we will be covering today would be one, to understand stress and its impact, what it is. Second would be how yoga can help with stress management in our daily lives. Like why only yoga? Why not any other sort of exercise? And why only yoga helps in this case? Third, we would go into the practical part, which would be practicing asanas and pranayam. Fourth, we would learn how to incorporate few tactics or strategies in our daily lives to deal with stress. Okay. And last, if time permits, we will do Yog Nidra as well. Okay. So to understand what is stress, okay, so the Oxford Dictionary, defines stress as it's some worry or pressure that is caused by something when you have too much to deal with. So for example, हम कब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा stress हो गया? We say stress बहुत ज़्यादा हो गया when we can't handle things, okay? When you can't handle things is when you say कि मुझसे नहीं हो रहा and your body feels tensed, okay? That is stress. सेकेंड मीनिंग ऑफ स्ट्रेस इज व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू समथिंग, किसी पे हम ज्यादा जोर डालते हैं, उसको भी स्ट्रेस डिफाइन किया गया है इन दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. ओके, so if you have got your notebook and pen with you, I ask you to keep one nearby. We'll have an interactive we'll try to reflect. If you have to just write down and question yourself, what would you describe as a stressful day? मतलब I'll just give you 2 minutes to do this. कि अगर आपको लग रहा है बहुत stressful day है, okay? When would you say it is a stressful day? When you feel rushed, when you feel there's a lot of work you can't handle, when there are surprises, when you don't have a plan in place. So you just have to take 2 minutes and maybe just write down like what describes a stressful day for you. Okay? Take your time, write down of what is stressful. कि आपको तनाव कब महसूस होता है कि आज तो मैं बहुत परेशान हूँ. Now the minute here. मुझे अभी कोई सबमिशन है, ऑफिस में लेट रुकना है, यू हैव टू बी देयर फॉर somebody इज अनवेल, घर पे कुछ दिक्कत हो गई है. So what describes it a stressful day? And following this is the next question for you. What describes as a good day for you? ठीक है, stressful तो हो गया कि ये चीजें हो गई तो stressful हो गया. But then what are other days where you feel, no, this is a good day for me. This is not stressful at all. You can take another 2 minutes to just self-reflect, because we, usually pass comments on the day. आज का दिन तो बहुत बकवास था. But we rarely reflect back and jot down कि क्यों अच्छा नहीं था.
We can take another minute and then we will proceed further. शोभा जी, आपको बड़ी खुशी खुशी से आप लिख रहे हैं व्हाट इज अ गुड डे। मैम मेरा बेटा भी साथ में बैठा है तो ये भी लिखने लग रहा है अपना, तो नहीं, इसकी बड़ी अच्छी बात है। अगर अभी इस उम्र से स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। वो लिखने लग रहा है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तब स्ट्रेस होता हूँ, जब नहीं करता हूँ जब अच्छा होता हूँ। ठीक है, चलिए। नाउ मूविंग फर्दर, आई जस्ट वांट अ रेज ऑफ हैंड्स फॉर यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि डू यू थिंक स्ट्रेस इज बैड फॉर अस? ऑल दोज हु बिलीव स्ट्रेस इज बैड फॉर अस, जस्ट लेट्स हैव अ रेज ऑफ हैंड्स हियर। जिन्हें लगता है कि तनाव हमारे लिए बहुत गंदी चीज है या गलत चीज है। Yeah, so we have Surbi ji raising her hand here. She believes that having stress is bad for us. Okay. So let us move further to understand what kind of stress is good for us and what kind of stress is bad for us. There's somebody else also whose name is iPhone. I don't know your name. Okay. Who has raised their hands and they also believe that stress is bad for us. Okay. So two of us are saying stress is bad for us. Others want to keep out of it. Okay. But let me ask the other question also. Who all feel stress is good for us? ये बाकी न्यूट्रल बैठे हैं, ना अच्छा है ना बुरा है। ठीक है। मैम थोड़ा somebody on the iPhone you're making marks और वो मेरे ना इस पे आ रहा है, प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं मैम। हाँ जी, राधिका जी बताइए। थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए ताकि काम करने का मोटिवेशन बना रहे। बट हम्म। ज्यादा हो जाए कि काम ही नहीं हो पा रहे तो फिर मुश्किल है। एग्जैक्टली। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि ज्यादा स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेस इसको हम टर्म्स में क्या बोलते हैं एंड व्हाट इट इज फॉर अस। ठीक है। सो मूविंग अहेड, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो डिफाइन करते हैं। एक तो होता है यू स्ट्रेस, जिसमें क्या होता है हमें पॉजिटिव स्ट्रेस मिलता है विच चैलेंजेस अस टू अडेप्ट एंड ग्रो। ठीक है। तो हम किसी भी स्ट्रेस को अगर कोप कर पाते हैं उससे तो हम उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रन 100 meters। ठीक है। अभी तक मेरा पर्सनल बेस्ट सपोज 14 seconds का टाइम है। ठीक है। बट आई स्ट्रेस माई सेल्फ एंड रन फास्टर एंड डू अ पर्सनल बेस्ट ऑफ 12 seconds। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज गुड। ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट pushes you to do better is eustress. So stress is not always bad. It also helps you to become better every single day. अब होता क्या है, जब हमारा स्ट्रेस होता है जो हम मैनेज नहीं कर पाते, जो हम कोप नहीं कर पाते, जिससे हमारी एनर्जी चली जाती है, वो बन जाता है डिस्ट्रेस। ठीक है। सो एज लॉन्ग एज हम कोप कर पाते हैं तब तक वो स्ट्रेस मैनेजेबल है। जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, व्हेन वी फील कंप्लीटली लॉस्ट, दैट इज व्हाट वी से वी आर इन डिस्ट्रेस। बट हम जनरली स्ट्रेस को ऐसे बोलते हैं आज तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। ठीक है। अब इस स्ट्रेस को हम पॉजिटिव में कैसे लेके जाए, नेगेटिव में कैसे लेके जाए, वो मैटर करता है। ऑल्सो स्ट्रेस में क्या होता है, कभी कभार कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है और कुछ चीजें नहीं होती है। सो व्हेन देन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स एंड व्हेन यू फील हेल्पलेस इज व्हेन यू फील मोर स्ट्रेस्ड। ओके। moving further, we will understand how our body responds to stress in terms of physical, emotional, mental, and in behavioral way. Okay. So in terms of physical stress, ठीक है, स्ट्रेस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मसल टेंस कर जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपको एकदम से स्ट्रेस, जरूरी नहीं है कि काम से है, अगर फिजिकल स्ट्रेन या स्ट्रेस भी आता है, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हमारे सारे मसल्स टेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नेक पेन और बैक पेन सबसे पहले ये शुरू होना हो जाता है। ठीक है। सेकेंड, हमें बहुत थकान महसूस होना शुरू होती है बिकॉज सो मच ऑफ एनर्जी इज गोइंग इनटू जस्ट थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग कि हमें बाकी कुछ करने का टाइम ही नहीं होता। ठीक है। एनर्जी ही नहीं बचती, सो नहीं पाते हैं, इस वजह से बार बार मुंह सूखता रहता है, सांस नहीं आती है, आर हैंड्स बिकम स्वेटी एंड समटाइम्स वी गेट कोल्ड हैंड्स ऑल्सो। हम कहते हैं ना वी हैव कोल्ड फीट कोल्ड हैंड्स, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है। दैट इज इंडिकेटर दैट यू आर अंडर स्ट्रेस। ठीक है। Stomach upset, when you start having stomach ulcers also, that is also a physical indication that आप stress में है। weak immune system, high blood pressure, heart problems, ये तब होते हैं जब आपका स्ट्रेस बहुत टाइम तक, मतलब ये जो ऊपर वाले जो सिम्टम्स है कुछ, if that persists for a really really long time, that is when the last three things start happening. You will start falling sick very easily, you will start having high blood pressure, and later on followed by heart problems as well. Okay. Moving on. So what are the emotional and mental ways? How does it impact our mood? First is you either go into anxiety where you're worrying about everything, and second you go into a guilt trip. ठीक है, कि ये गलत हो गया, ये ऐसे करना है, ये क्यों किया। ठीक है। So these are the ways how stress impacts you.
सेकेंड इज यू बिकम एंग्री, क्योंकि पता नहीं चल रहा कैसे डील करना है इससे, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, यू बिकम एंग्री, यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड। आप मूडीनेस आप में बहुत आ जाता है, एक मोमेंट यू आर ओके, आई मीन यू आर जस्ट दैट ट्रिक ऑफ द बलून, कि अगर किसी ने टक कर दिया तो किसी तरह से यू आर गोइंग टू हैव एन आउटबर्स्ट ऑफ सम मैनर, बिकॉज यू फील हेल्पलेस, कोई है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, यू हैव अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, यू ऑल्सो कैनॉट फोकस। अब बहुत सारी चीजें भूलने भी लगते हैं और बेचैनी भी बढ़ने लगती है, सो यू गोना हैव फॉरगेटफुलनेस एंड ऑल्सो रेस्टलेसनेस इन योर डेली लाइफ। इसके बाद बिहेवियरल, तो अगर जब ये दो चीजें होती है, हाउ डू वी ट्राई टू कोप अप विद इट, जो सही नहीं होता कई बार। जो फर्स्ट इज वी स्टार्ट यूजिंग सब्सटेंस अब्यूज, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, एनी ड्रग और ओवर कैफीन अब्यूज, ठीक है, कॉफी पी लेती हूँ, काम करना है कॉफी पी लेता हूँ, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिहेवियरल वे हाउ योर बॉडी इज ट्राइंग टू कोप अप। Okay, yeah. Thank you so much, Pooja ji. ठीक है. Next is the change in your appetite. Okay, we either stress eat too much or too less. ठीक है. कुछ करने नहीं मिला खा लो, ठीक है, जैसे स्मोकर्स कहते हैं कुछ करने नहीं मिला फूक लो, सो दिस इज योर एडिक्शन, कुछ करने नहीं मिला खा लो, एंड दैट इंस्टेंट हैप्पीनेस, हाँ हाँ मैंने खा लिया अब खुशी मिल गई, ठीक है, एंड इट्स जस्ट एन एस्केप, इट्स नॉट अ सोल्यूशन बट जस्ट एन एस्केप टू योर स्ट्रेसिंग सिचुएशन। थर्ड इज यू स्टार्ट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर्स, ठीक है, अब वो चिड़चिड़ापन कहीं तो निकालना है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे कहीं बार निकल जाती है, जो आप बाद में फिर गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो, ठीक है, you'll have anger outburst and also you would not want to go into the society, you'll have social withdrawal, ठीक है, आप घर के बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको वही डर है कि लूप हो जाएगा, मिलूं तो वो पूछेंगे पूछेंगे तो आई आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट के बाद गिल्ट, तो ये साइकिल एस्केप करने से फिर आप बाहर नहीं जाते, देन इट स्टार्ट यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, उसके बाद ये पूरा आगे पीछे साइकिल आपस में घूमता रहता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये तो स्ट्रेस से होता है, हमारे शरीर में फिजिकली एनाटॉमी से स्ट्रेस का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो पहली बात है, हमारे शरीर में एक होता है पीएनएस, ठीक है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट इज योर इनिशियल रिस्पॉन्स टू फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई झटके से आपकी तरफ कुछ फेंकता है तो इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है, यू टक, ठीक है, दैट्स योर इनिशियल रिस्पॉन्स टू इट, वो जो रिस्पॉन्स आता है वो आपके नर्वस सिस्टम से आता है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम हमारे अंदर चलता है उसको हम कहते हैं पीएनएस, पीएसएनएस, ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा नर्व जो रन करता है हमारे सर से लेके हमारे पेट तक इज द वेगस नर्व, ठीक है, तो ये राइट साइड पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये येलो कलर का नर्व है, ये दिस टेक्स अबाउट, जो हमारे सिस्टम में जितने भी नर्वस सिस्टम नसें जो जाती है सर से लेके स्पाइन के थ्रू पूरे बॉडी में, दिस टेक्स 75% ऑफ दैट सिस्टम, ओके, तो ये क्या करता है, दो काम है इसके, एक तो इट चेक्स दी ऑर्गन्स, ओके, वन इज it checks whether your organs are okay or not. As you can see, it goes through all the vital organs, आपके lungs से, heart से, liver, stomach, intestine, small intestine, मतलब पूरा, it controls all of these systems. जहां से भी कहीं से भी कुछ स्ट्रेस आएगा, इट सेंड सिग्नल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दिमाग को पंप करना है कि हार्ट को कि पंप, ठीक है, सो ये जो मैसेज जाएगा ये वेगस नर्व से जाएगा, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हार्ट द वेगस नर्व कैरीज दैट मैसेज अगेन टू द ब्रेन। सिमिलरली अगर स्प्लीन, लिवर, इन्होंने कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करना है डाइजेशन के लिए, तो ये ब्रेन ये नर्व लेके जाता है, मतलब इसे समझिए नेटवर्क सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि चलो अभी सीक्रेट करो जूसेस, और हो गया है चलो अभी बंद कर दो जूसेस, ठीक है, तो दिस इज लाइक अ मैसेंजर सिस्टम। एंड ऑल्सो इससे क्या होता है, स्ट्रेस, दिस इज एन एंटी स्ट्रेस रिस्पॉन्डेंट, सो ये बाय डिफॉल्ट काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप दौड़ रहे हैं, आपके दिल को तेज दौड़ना है, ठीक है, या ब्रेन विल से चलो तेज दौड़ो, ठीक है, सो दैट मैसेज ऑफ टू एंड फ्रो हैपेंस थ्रू दिस नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में आता है तो क्या क्या इश्यू होते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस या नर्वस, तो इसका स्ट्रेस इज सिमिलर टू हाउ यू फील व्हेन यू आर स्ट्रेस, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको एब्डोमिनल पेन, जैसे छोटे बच्चे नहीं बोलते एग्जाम जाना है या तो पेट में दर्द हो रहा है अभी नहीं जाना, नर्वस, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस आपका मन नहीं करता, यू फील ब्लोटेड, आपको एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है, चेंज इन योर हार्ट बीट व्हेन यू आर एंशियस, पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है,
इन अ लॉन्ग रन आपको ब्लड शुगर, टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। आपको चक्कर जैसा महसूस होगा। तो वेगस सिस्टम, सिंस इट इज दैट फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है, आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, तो वो हर कोई चीज करेगा जिससे आपको वो सिग्नल दे रहा है कि समथिंग इज नॉट गुड, समथिंग इज नॉट गुड। आपको कभी कभार व्हेन यू आर वेरी नर्वस, व्हेन यू आर एट दैट फेज इन अ डिप्रेशन और एंजाइटी, तो आपको नॉशियस और वॉमिटिंग फीलिंग होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज अ साइन, पता है कि आपका वेगस नर्व इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। कभी कभार when you are in lot of pain या in a lot of and we have a loss of voice, हम कहना चाहते हैं बट आवाज हमारी नहीं आती है। These are extremes of when you are under stress, but all of these happen when vagus nerve is impacted. Okay. Now अब हम जब योगा करते हैं, ठीक है ना, why yoga comes into play। अब योगा में जो डिफरेंट आसन्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनली अगर हम जा रहे हैं तो हम प्राणायाम पे कर रहे हैं, एक्सटर्नली अगर हम आसन्स पे जा रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग सर्टेन आसन्स, आप किसी तरह से बेंड कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो आप ये वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एज वी सॉ इन द पिक्चर, अब वेगस नर्व जो सर से लेके पेट तक जाता है, नाउ टिल द रिब्स, ये वेगस नर्व तो अंदर है, रिब केज के अंदर, सो वी कैन नॉट प्रेस अ लॉट ऑफ वेगस नर्व हियर। बट जो हमारा रिब केज के नीचे, लंग से नीचे वाला हिस्सा है, विच इज द एब्डोमेन एंड द स्टमक वाला एरिया है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। तो जितने भी आसन हम योग में करते हैं टू रिलीव द प्रेशर इन दिस वेगस नर्व, वो हमारे वही आसन होंगे जिसमें हम अपने पेट को प्रेस करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन व्हाई सर्टेन आसनास आर फोकस्ड इन योगा, व्हिच इज सेड टू बी व्हाट, दैट इट हेल्प्स यू टू रिलीव स्ट्रेस, ठीक है। अब योगा में हम जैसे कि अभी तो खैर योगा फैशन हो गया है, मॉडर्न, सुपर मॉडर्न योगा, अल्ट्रा योगा, योगा फॉर फेस ग्लो, योगा फॉर लॉस आर्म फैट एंड ऑल, बट योगा इज नॉट दैट। ओके, द मेन इनिशियल पतंजलि योग सूत्र जो उन्होंने लिखा था, योग सूत्र, द मोस्ट प्रेफर्ड एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ योगा, yoga is basically done for samadhi, okay, and there are 8 steps, 8 limbs to yoga, ठीक है। हमारे लिए योग सिर्फ आसन के नाम पे रह गया है अभी, but योग is much more than only asanas, okay। तो पहला आता है यम नियम, these two are the methods in which you should conduct yourself personally। यम में बहुत सारी चीजें पर्सनल लेवल पे होती है, जैसे आपको क्लेनलीनेस रखना है, सच बोलना है, झूठ नहीं कहना है, चोरी नहीं करनी है, सेटिस्फैक्शन रखना है। नियम में आता है देयर सर्टेन रूल्स जो आपको दूसरों के प्रति करना है, इन द सोसाइटी व्हाट यू शुड बी डूइंग, ठीक है। फिर थर्ड लेवल पे आता है आसन। जब आप पहला 2 कर लेते हैं, देन यू आर प्रिपेयर टू डू आसन। जब आप आसन कर लेते हैं, फिर प्राणायाम के लिए आप एक जगह बैठ पाएंगे, वरना आप और मैं बिना उस प्रैक्टिस के, उस स्ट्रेंथ के एक जगह बैठ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। व्हेन यू आर डन विद आसन एंड प्राणायाम, प्रत्याहार इज आइसोलेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दी वर्ल्डली नीड्स, मतलब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो किसी आउटवर्ल्डली चीज के लिए। उसके बाद आता है धारणा, कोई चीज को आप धारण करते हो कि मैंने ये करना है, ये प्राप्ति मैंने करनी है, ऐसा होना है। एंड देन यू पुट ऑल योर अटेंशन, विच इज ध्यान, ऑल्सो कॉल्ड एज मेडिटेशन। उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, उसके बाद समाधि मिलती है। सो योग बेसिकली इज दीज 8 स्टेप्स लीडिंग टू समाधि। वो अब हमने उसे बहुत छोटा बना दिया है आसन, बट योग इज मच मच मोर, ठीक है। गोइंग नेक्स्ट, ओके। एंड अगर योग का जैसे कि ओके, सो योग में देर आर 4 सेक्शंस इन योग एंड देर आर अबाउट 195 चैप्टर्स, ठीक है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू के योग में हम जितने आसन को हम जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसने स्क्रिप्चर लिखे, मतलब हु इज द फादर, जो पतंजलि जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने अपने उस टेक्स्ट में आउट ऑफ 195 सूत्रास, सिर्फ 4 या 3 सूत्रास में ही आसन का जिक्र किया है, ठीक है। Rest 192 sutras are about the other 7 things that he is talking about. Okay, and for us, yoga has just become that one asana. Okay, so we are going to understand with this learning in the session, we are going to go and understand that yoga is not just asana, it is a way. हम कहते हैं ना, yoga is a lifestyle, it's a way of living. So it is not just asana. Okay, if you want, you can lean somewhere. We'll start asana in 5 minutes. Okay, that is why asanas are important, to have a strong body to sit properly. Okay.
That's fine. So just this slide and then we'll go to asanas, okay? So second sutra of yoga. So first yoga का जो first sutra है वो कहता है अथ yoga अनुशासनम. So now starts the discipline of yoga. ठीक है? So until unless you are committed and you are disciplined, you cannot do anything. So सबसे पहले पतंजलि जी कहते हैं कि पहले तो भैया discipline चाहिए. And the second which I have mentioned on the screen, which is चित्त वृत्ति निरोध. Okay? विच मीन्स आपके मन के अंदर जो वृत्ति आती है, फ्लक्चुएशन आते हैं, उसको वो रोकता है या बंद करता है. ठीक है. नाउ जब हम स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस इज मेजरली ड्यू टू व्हाट, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, किसी चीज के बारे में सोच रहे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे. ठीक है. दैट इज व्हाट इट इज. तो योग का जो फर्स्ट और सेकेंड, मतलब पहले ही उन्होंने पकड़ लिया है कि योग है क्या, आपको ये चीजों के बारे में रोकेगा. कैसे करेगा, फिर उन्होंने वो स्टेप्स सारे आपको बताए हैं. ठीक है. So asanas and pranayams out of the 8 are 2 ways where we can do this. Okay, so we are going to go ahead now and we are going to finally practice asanas here. Okay, I hope that is clear. Okay, iPhone ji, was there a raised hand long back or you have a question to ask? If anybody has any question to ask, abhi tak jo karaya hai, you can go ahead and ask if you feel there was too much info. Haan ji, iPhone ji, yes. If you can just tell me your name as well. Yes, you can go ahead and please unmute yourself. Somebody called iPhone has joined in. If you can please unmute yourself. I see your raised hand and yes, go ahead. I tried to like click on that, but it's still like I don't know why there is some problem with that. I don't have any questions, but still I'm trying to raise down that. Okay, Now okay. Yeah, now it's lowered. Yes, it's lowered. Yeah. I think you raised it when I asked the question, how many of you think stress is bad for us? yeah. Okay. ठीक है. Chaliye. So we are going to start with few asanas, okay, which would be pressing the belly. Now you know why we would be pressing the belly here. It's important to have that knowledge. पहले हम warm up से शुरू करेंगे, very basic. We're going to sit cross-legged. Okay. I'm going to be seated here so that I'm visible to everybody. Okay. Sitting cross-legged here, palms can be either facing down or up. That's not a problem. Okay. We are going to first do the conditioning. Seated here. We're going to close our eyes. Take a deep breath in and exhale. Inhale and exhale. As you are seated here, please try to recall everything that we learned in the session so far, especially how the vagus nerve is distributed from the head to the upper body and the stomach region. Try to imagine a net mesh-like structure that's running from the head through the entire upper torso. Breathe in and breathe out. Inhale and exhale. Please join your hands in prayer position near the chest. We will be chanting Om once, followed by Gayatri Mantra. Kindly take a deep breath in. Om. Chanting the Gayatri Mantra now. You may choose to say it with me or repeat after me if you wish to. Inhaling here. Om Bhur
Swaha. Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Kindly rub your palms here. Feel the warmth in between the palms as you rub them. Cup your eyes, blink your eyes a couple of times, and gently take the hands away. We are now going to proceed with the asanas. First of all, we are going to try and do the cat-cow position, which is going to be on all our fours. Okay. So before we go into the asanas, let us do a little bit warm up for opening up the entire body, starting with the neck here. Inhaling, looking up towards the ceiling, and exhaling, we are going to tuck in the chin to the chest here. Okay. Few basic warm up that we can do every day, and these are some that you can also do on the chair in the office. Okay. Inhaling up and exhaling down. Inhaling up and exhaling down. 5 more times. Inhaling up, exhaling down, inhaling up, exhaling down. Last 2 times. Please inhale up and exhale down. Inhale up, exhale down. Bring your head to the center. Okay, somebody just mentioned that they had breakfast 15 minutes pehle. I had specially requested in the group to not to have it. Ma'am, if you want to, you can just do few rounds, matlab ke, but if you want to take maximum benefits of the asanas, you should ideally be doing it empty stomach. Okay, that's completely fine. I'm also going to be sharing the recording of the session, so you can also practice it whenever you have the time. That's fine. Right now, we're just going to do a few rounds, not a full-fledged session, so it's fine if you join in. Okay. Next, we are going to rotate the head here. Okay. If you have cervical issues, please do not move the head ahead of the shoulders, but just behind the shoulders. If you're doing otherwise, okay, you can do complete rotations here. Okay. 5 rounds in one direction and 5 rounds in the opposite. Please start inhaling. Your head will go behind the shoulders, and exhaling, your chin tucking into the chest and doing a complete rotation here. Okay, you can do it at your own pace. There's no need to follow my count. I'm just counting to time us. Okay, otherwise, you can do it at your own pace. There's no rush. Be very gentle and loving to your neck here. And reverse. 5, 4, 3, 2, and 1. We're going to bring the head to the center. Okay. So next we're going to do a variation of cat cow on the mat. Okay. Which you can also do on the chair when you are in office, so that it helps relieve the vagus nerve here. Okay. We're going to rotate the shoulders backwards and forwards. Okay. When we do this, we're also going to move the upper torso. As you inhale, you're going to bring the chest up towards the ceiling, bring the shoulders back. And as you exhale, you're going to tuck in your shoulders and bring the chin closer to your body as much as you can. Okay. So inhaling, rolling the shoulders backwards, looking up towards the ceiling here. And as you exhale, tuck the chin in, bring the shoulders as close as you can. Okay. Let's start here. 1, inhale, open up the chest, look up towards the ceiling.
And as you exhale, bring the shoulders up, tuck the chin in, and squeeze, squeeze, squeeze your shoulders completely here. Inhale, open up the chest, look up, and exhale. Squeeze, squeeze, squeeze in completely. Bring the chin into the chest here. Inhale, up, and exhale, down. Inhale, up, and exhale, down. 3 more times. Inhaling, rolling the shoulders back, looking up, and exhale. Chin in, rolling the shoulders in the front, and squeeze. Inhale, up, exhale, down. And one last time. Inhale, up, exhale, down. Bring the shoulders to the neutral position and relax here. Next, we are going to do twists. Okay, so spine twist, where we also twisting the waist here. Okay, while sitting down, you can also do this on the chair as you're seated or on the couch whenever you are, wherever you are. Okay, what we're going to do is while we are seated down here now, we are going to inhale, raise the hands up, and as you exhale, so stretch the spine and the hands upwards. As you exhale, you're going to twist, turn to the side, place one hand on the knee, second hand on the floor, okay? But please be mindful that you're not leaning back completely. You are just twisting the spine here. Your fingertips can be on the mat, trying to open up the chest completely, twisting your abdominal region and looking at the wall behind you. So you're not going to look down towards the floor or up towards the ceiling, but exactly at the wall behind you. Okay? Then we are going to inhale, look up, and as you exhale, twist to the other side, trying to look at the wall that's behind you. And the hand which is on the knee, you're going to apply pressure on the knee and give that extra twist. Okay, if you need to give that extra twist here, but you're not going to lean here, and then the purpose is gone. Okay, let's begin here. With an inhale, raising the hands up towards the ceiling, pulling the spine and the hands upwards as if somebody is stretching you in the upward direction. And as you exhale, please twist. Look at the wall that's behind you. Open up the chest here and hold the position while you breathe in and out. 5 breaths here while holding this position. Chin parallel to the ground, looking at the wall behind you. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale, and one more time. Inhale, exhale. Raise the hands up above your head with an inhale, and with an exhale, twist to the other side. Drop your hands down, turn your spine, and look at the wall that's behind you at the eye level, holding the position here again, and breathing in and out. 5, in and out. 4, 3, 2, 1. Please inhale, raise the hands here and release. Okay. So what happens is when you breathe in and out, you're going to do very deep breaths so that you feel that muscle group behind your upper back region around the shoulder, like scapula region here, shoulder blades, and the spine. Okay. So that is why you should be twisting completely. If you need to, you can also close your eyes here and breathe in and out, connecting with the scapula here. Again, we're going to do this one more time, this time closing the eyes and being aware of the upper back region here. Please inhale, raise the hands up towards the ceiling, pull the body upwards, the spine and the hand, turning to the right. Place the hands on the knee on the floor, give a good twist to the spine here, close your eyes and breathe in and breathe out. Take a deep breath in and out. Deep breath in and out. One last time, deep breath in
And out. Raise the hands here with an inhale. And with an exhale, drop to the other side. Twist. Again, close your eyes once you have had that comfortable twist here. Remember to breathe in and out very deeply. 1, inhale and exhale. 2, inhale and exhale. 3, inhale and exhale. 4, inhale, exhale, and last count. Please inhale, raise the hands up, and bring the hands, both your hands down to the knees here. Okay, we are now going to move to our cat cow pose, which is moving the spine here completely along with the upper torso. We are going to move completely. For that, we are going to come on our knees. Okay, my regular students know this. Oh, ma'am, will you discuss Kapalbhati? Pooja ji, yes, and after the asanas, we are going to discuss about pranayam as well. Yes. So coming on the knees here, okay, there is a shoulder level distance between my knees and also shoulder level distance between my feet. So my knees are not joined together, but there's comfortable distance here. What I'm going to do is I'm going to place my elbows in front of the knees, palms on the mat here. Okay, wherever my middle finger ends, I'm going to place my wrist and come on all fours. I'll repeat, placing the palms first on the mat, wherever the middle finger ends, bringing my wrist and coming up on all fours. Okay, toes are pointed outwards. What I'm going to do here is first I'm going to exhale. I'm going to exhale, bring the spine up towards the ceiling and squeeze in completely, bringing the chin into the chest here again. Okay. As I inhale, I'm going to look up, moving the hips upwards towards the ceiling, arching the back completely here. Okay. As I exhale, I'm going to look down and squeeze. As I inhale, I'm going to look up and bring a big arch to my back. Okay. We'll be adding certain motions here to make this more perfect. But right now, just inhaling and exhaling. Also, make sure that when you are in this tabletop position, your entire body weight is distributed along the palms right till the fingertips. You're not just putting the weight on the wrist, but on the entire palm till the fingertips here. Let's begin. 5 rounds here. Please exhale. Tuck the chin in. Look through your knees here and squeeze, squeeze, squeeze completely, pulling the shoulder blades up towards the ceiling. Inhale, arching the back here, looking up. Arch the back as much as you can. Exhale, tuck the chin in. Squeeze, 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 squeeze completely. Inhale, arching. Exhale, squeeze, 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 squeeze. Inhaling here, arching the back completely. Very good. Exhale, squeeze. Inhale up towards the ceiling. And one last time, please exhale, squeeze in. And inhale. Come to the center in neutral position and you may sit down. What we're going to do is we're just going to add a few steps to this cat cow. Okay. Now when we were doing cat cow, we were arching down and up at the same time. Okay. अभी हम क्या करेंगे? We are going to go in a sequence from the tailbone to the neck. ठीक है, तो नीचे से ऊपर we are going to feel each vertebrae. Okay, each तो चलो आज नहीं हो पाएगा if we are new. Okay, but at least half of it. ठीक है, so there are 33 vertebrae which are placed on top of the other. Okay, we are going to try and move it from the tailbone right till the base of the neck. How we are going to do this first? Okay, when you are exhaling. Okay, so I'm here. So now when I'm inhaling, I'm going to first just move the hips, the mid back, the upper back, and finally the head and the chin. When I'm exhaling, I'm pulling my core in,
My hips are turning down. Then my mid back goes up. Finally, the head and the chin. So the sequence of a wave that goes from down coming to the head again. Okay. So from down, hips, you're going to turn the hips either upwards or downwards, wherever you're inhaling or exhaling. And then from here, moving to the mid back, upper back, the neck, and then moving the lower, mid, upper, and finally the head. Okay. We'll just give it a shot 5 times. We'll just try if we are aware of the spine completely here. Okay. Let's come on all our fours again, taking the markings. We'll start with an exhale first. Please exhale, squeeze, squeeze, squeeze in completely. As you inhale, please be mindful of the spine. First, let go of the hips. Relax the hips here, the mid back, upper back, neck, and finally the head. As you exhale, put the core in, turn the hips down first, and the head towards the end, and the chin in. Please inhale again. Release the core, hips moving upwards, mid back, upper back, finally the neck. And as you exhale, core tucked in, rotate the hips, mid back, upper back, head and chin squeezing in completely. Pull up towards the ceiling. And last time, please inhale here. Lower back, mid back, upper back, head and chin. Staying here for 10 breaths. Inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distribute the weight along the palms, okay? 8, 9, and 10. As you exhale, the hips go down first, mid back, upper back, your shoulders, and finally the head and the chin. Holding here again for 10. Squeeze, squeeze completely. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And please come to neutral position. You're going to rest here in child's pose. Our hips come over the heels here, our forehead coming towards the floor, and our hands walking away from the body completely, giving a good stretch again to the upper body here. Okay. We are going to hold this position again for 10 counts. If you feel that you're not able to reach the floor, you can open up the knees, increase the distance between the knees, and let your chest, your head, come on the floor completely. Holding here for 10. Inhale and exhale. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Come up to the center. Next, we're going to do Paschim Uttanasana, extending the legs here in front of us, sitting straight. What we're going to do is we are going to do dynamic Paschim Uttanasana. So we are going to do forward bending. It's a forward bending asana. We're going to bend the hands at the elbows, place the palms parallel to the ground here. Okay. We are going to inhale. We are going to hinge from the hips. Okay. My spine is completely straight. I am hinging from the hips, leaning backwards. And then with an exhale, going forward, extending my hands as much as I can. Okay. Inhaling, hinging backwards, and exhaling, going forward. I'm not bending, arching my back here. So मैं अपने रीढ़ की हड्डी को बेंड नहीं कर रही हूँ. मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी. ठीक है, मैंने सामने की तरफ देखना है. My intention should be to just cross my toes. My toes are pointing up to the ceiling. So behind, inhaling, leaning behind, and taking that momentum very gently forward. Okay, inhaling behind and exhaling
forward. We're going to do this 10 times like we are rowing a boat. Inhale back, exhale forward. Extend the arms here. Inhale back and exhale forward as much as you can. If your wrists can go across the legs, that's fine. If just your fingertips are reaching there, that's fine as well. 4, inhale back, exhale forward. 5, inhale and exhale. 6, inhale and exhale. 7, inhale and exhale. 8, inhale and exhale. And 9, inhale, exhale. Last count. I see all of us reaching the toes. So we're going to hold the toes here. Inhale and exhale. Hold the feet here. And staying here for another 10. Keep breathing. Inhale and exhale. 9, 8. Deep breath in and out. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Release the hands first. Hinge from the hips. Come up to the center. Okay. So now if you're seated on the chair in office, how do you do this? So when you're just seated on the chair, you can just bend forward and come up. Okay. So if you're on the chair and if you feel office mein bhi karna hai mujhe, on the table, you can just hold the table here. You can just lean a little forward and come up to the center. Okay. Next, we're going to be lying down on the mat. We're going to do Supta Bhadrasan here. We're going to lean towards the right, turn towards the right, shoulder on the mat, and then completely lying on the mat here. Supta Bhadrasan is doing butterfly pose while lying on the mat here. Okay. So let's come on the right and on the mats here. We are then going to bend the legs from the knees, feet flat on the ground, and drop the knees down on the floor, making a butterfly pose here. Okay. Hands can be on the thighs, and very lovingly, we can just close our eyes and breathe. Okay. We're going to be here for about 2 minutes, just lying down like this, relaxes our vagus nerve and our body. We can practice this before we go to sleep every night. You can be on your bed very comfortably and lie down like this for 2 minutes before you fall asleep, inhaling and exhaling. Also, a modification that you can add here is raise the hands above your head, bend them from the elbows and hold the opposite elbows here. Okay. Raise the hands up above the head and holding here, relaxing, just letting go of the complete body. Let it drop down to gravity. Inhale and exhale here. As you breathe in and out, just be mindful how the navel point moves. आपकी नाभि किस तरह शरीर से दूर और शरीर की तरफ आपके सांसों के साथ चल रही है. जैसे ही आप सांस अंदर भरते हैं, आपकी छाती और आपकी नाभि आकाश की ओर चढ़ना शुरू करती है. और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं, आपकी नाभि और आपकी छाती पृथ्वी के तरफ गिरना शुरू करती है. Inhale and exhale and be aware of this breath here. Breathe in and breathe out. Inhale and exhale. Next, we are going to lie down in Shavasana for a while and do Yoga Nidra.
Okay, so for that, we are going to just bring the hands back, extend the legs here, keep about 1.5 to 2 feet distance between the legs. Let your ankles be completely loose. Let your feet just drop down to gravity. Your hands will be at the sides of your body, palms facing up towards the ceiling, and let the wrist and your shoulders be completely loose. In case if you feel that there is a big arch in the lower back region, we are going to hug the knees here, remove that extra arch, let there be just a little small natural arch. Extend the legs here again and just let our ankles be completely loose, our knees completely loose, our wrists, fingers, elbows, shoulders. Adjust your shoulders and shoulder blades if there is a need to just relax them. Relax your eyebrows if they are tensed. Release any tension in between the jaws. Relax the facial muscles. If your tongue is touching the upper palate of the mouth, which means that you're still under stress, you are conscious of your postures here, but let go, let your tongue drop down to the lower jaw. And relax completely here. As we lie down here, we are going to focus on the chakras of our body, focusing only on the upper torso, the spinal cord, and the nervous system. Starting at the tailbone, at the end of the spinal cord, is the Muladhara chakra. A little above that is the Swadhisthana chakra. At your navel point is the Manipura chakra. At your heart is the Anahat chakra. At the throat is the Vishuddhi chakra. On the forehead, in between the eyebrows, where you have your third eye, is the Agya chakra. And at the top of your head, the crown of your head, is the Sahasrara chakra. These 7 chakras form the major nodes of our nervous system. Scanning these 7 chakras again, the end of the spinal cord, a little above that, where you have your reproductive organ, is the Swadhisthana chakra.
At the navel point, we have the Manipura chakra. At the heart, Anahat chakra. The throat, Vishuddhi chakra. Where you have the third eye, Agya chakra. And the top of your head, Talusthan, Sahasrara chakra. These 7 chakras are getting cleansed. And there are no blockages in these chakras. If you feel any vibration or sensations in the body, that's completely normal. Your body is in a complete relaxed state, completely safe. Bring some awareness to your feet and the hands. Please move your fingers and the toes a little bit. Join the feet here and turn to the right. Turn to the right and stay in this position for another minute. You can make a pillow with the arm here. Rest your head on the arm. You're going to be here for a minute and three. Relaxing here. You can go to the front one. Push through the palm and let's come and be seated on our mats here. So, Yoga Nidra is a very effective technique to just relax and let go of the body completely. Okay. So, when you have had a very exhausting day from work, you can come home, do a few stretches to just, let go of all the tensed muscles and just lie down. Okay. Even though people think Shavasana is the most easiest thing to do in yoga, it's the most difficult to be awake and asleep at the same time. It's not an easy task. A lot of people love Shavasana, but it's not what they imagine it to be. Okay. To be asleep and awake is a challenging task. Okay. So Pooja ji coming to our pranayams and discussing about Kapalbhati now. Okay, Pooja ji specially asked Kapalbhati कर रहे हैं. ठीक है. So first we are going to do Kapalbhati. Okay, so people first पहले तो ये जानना जरूरी है कि किस किसने नहीं करना है. ठीक है, that is important to know. So first is people who have high blood pressure should not be doing Kapalbhati. Okay, Kapalbhati increases the oxygen into our brains and the bodies. तो वो एकदम से blood pressure नहीं है करना है. Second, if you are on your periods, नहीं करना है please. ठीक है. If you are expecting or if you're conceiving, you've already conceived, you're pregnant, आपने नहीं करना है. Any abdominal surgeries आपने नहीं करना है. अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, if you have high power, you're going to remove your glasses, close your eyes, and then practice Kapalbhati. Okay, Kapalbhati, if you break down the word, Kapal is the skull, Bhati is the shining. Okay, in some texts it is called as shining of the skull, and in some texts it is called as the shining of the entire face. So Kapalbhati helps you to get that natural glow in the face, क्योंकि आप अचानक से ऑक्सीजन उसमें डाल रहे हैं. Okay. Second, why Kapalbhati is also important is to relieve if you have any sinus issues, because वो nasal passage पे pressure लाता है. अगर आपको कोई sinus issue है, with regular practice of Kapalbhati, it can go away.
ओके एंड इफ यू गो टू एडवांस टेक्निक्स कपालभाति के साथ अगर आप जलनेति वगैरह सारा सब कुछ करते हैं फिर तो आपके 6 महीने में आपकी साइनस की इशू पूरी तरह से चली जाएगी एंड फॉर मी दैट हेल्प मी विद रिड्यूसिंग माई आंखों का नंबर ठीक है मेरा आंखों का नंबर 1.5 था बट विद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ जलनेति बिकॉज वो इंटरनल नर्व्स कनेक्टेड होते हैं माइक्रो नर्व्स तो उससे मेरे आंखों का चश्मे का नंबर 1.5 से 1 हो गया ठीक है 0 तो नहीं हुआ बट कम हो गया ठीक है सो रेगुलर प्रैक्टिस उसके बाद मैं इतनी खुश हुई कि मैंने फिर प्रैक्टिस छोड़ दी ठीक है सो बट विद रेगुलर प्रैक्टिस यू आर सपोज टू डू इट एवरी डे ठीक है सो वी आर नॉट गोइंग टू डू जलनेति टुडे बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द कपालभाति पार्ट ऑफ इट कपालभाति इज द फोर्सफुल एक्सहेलेशन ऑफ एयर ठीक है जो हमारे हाथ होंगे वो ज्ञान मुद्रा में होंगे आई एम गोइंग टू प्लेस इट इंडेक्स एंड थंब जॉइनिंग ईच अदर द अदर 3 fingers टुगेदर प्लेसिंग देम ऑन माय नीज हियर सिटिंग स्ट्रेट इफ यू नीड टू यू कैन पुट अ कुशन बिलो द हिप्स अगर आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं अभी आपकी बैठने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है हिप्स के नीचे आप कुशन रख सकते हैं योगा ब्लॉक ब्लैंकेट जो भी है ठीक है मिसेस राधिका मिस्टर राधिका जी वहां पीछे कुशन है यू वर लुकिंग अराउंड फॉर समथिंग यू कैन कीप अ कुशन बिलो द हिप्स इफ यू नीड इट द मोमेंट आई सेड कुशन देयर वर होप्स इन हिज फेस लाइक कुशन ठीक है so you can grab a cushion and just sit okay you're going to sit straight and you're going to forcefully exhale from the nostril इसमें मुंह का काम बिल्कुल भी नहीं है you're going to exhale from the nostril चेहरे पे कहीं तनाव नहीं आएगा ठीक है you're not going to be stressed you're not going to bring the shoulders up or you're not going to move your chest way too much okay the pace of the exhalation should be one exhalation as a beginner every 2 seconds okay so for example when you become a little advanced you can do 1 second में एक preferably don't try to do like Baba Ramdev ji which is dhar 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 like this okay इतना blood pressure high नहीं करना है so we can go at a normal pace which is 1 second पे 1 stroke okay we are going to try and do 10 first and then I'll explain you how to end the stroke okay let's try and do 10 first if you have any questions you can ask me forceful exhalation from the nostrils as if you are blowing your nose Okay, so everybody is clear with this forceful exhalation and passive inhalation. Okay. Now, once you're clear with this, how we are going to end this? When you end at the last stroke, you're going to bring the navel in complete. So I'm exhaling here. I'm going to bring my navel in completely. I'm using my hand just for indicative purposes. I'm just going to exhale here, tuck my chin into the chest. Okay, I'm going to block my windpipe, which is called as Jalandhar Bandh here. And exhale out all the air. Okay, there should be nothing inside. Whenever you feel that now you need to breathe in, you can't do this anymore, you're going to raise the head and inhale from the nostrils here. Okay, at the last stroke, I'm going to repeat again while we are doing it. Again, we are going to do 15. Instead of 10, we are going to do 15 now. You might feel a sudden rush, or if you get dizziness in the head, if your head starts paining, please stick to long. 2 minutes, Pooja ji. Yes, go ahead. You can just ask before we do the count. If you can just type or unmute yourself. Yeah. Yeah, ma'am, like when we are exhaling, so there is a passive inhalation, right? So that is for a very short duration. Yes. Because you're Okay. forcefully exhaling, it's enough for you to exhale out again. Okay. Because I feel like there is no time for inhalation when You we are don't feel exhaling. breathless, right? No, 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 no. No. Yeah, that's fine. That's fine. That's okay. Yeah, Okay. let's do this. 15 counts here. Let's start. शोभा जी आप लिमिटेशंस में आते हैं क्या जो नहीं कर सकते okay. Remove out all the air after the last stroke. Exhale completely. Tuck the chin into your chest. And just stay here till the maximum capacity. जब तक आप रह सकते हैं. And whenever you feel like breathing, please raise the head here and inhale from the nostrils, okay?
with regular practice, what we are trying to do is, with what we will do is, जब तक हमारा सिर यहाँ से यहाँ तक आता है ऊपर, तब तक हमारी पूरी इनहेलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है? ये ना हो कि यहाँ सांस ले ली फिर गर्दन बस ऊपर आ रही है, गर्दन ऊपर आ गई और फिर सांस ले रहे, ठीक है? There should be mind body coordination when you are raising the head. We are also going to inhale here, okay? So one last time we're going to practice this. शोभा जी आप deep breathe in out कर सकते हैं, ठीक है? Yogic deep breathing, inhale and exhale, ठीक है? Let's begin, all of us. 15 strokes here. Let's begin. And after the last stroke, pull the navel point into the spine, completely inhaling here, tucking the chin into your chest and holding for as long as you can. Holding, holding, holding. And whenever you feel like breathing, be mindful this time that the length of your inhalation and the time for the head to come to the center should be the same. With a couple of blinks, open your eyes here. Okay. Next, we are going to do Anulom Vilom. Radhika ji seems happy about something. Okay. We are going to do Anulom Vilom. When should it be performed? Okay. When should it should be performed? Empty stomach, preferably in the morning. You can also do it in the evenings, provided you have 3 hours of gap between your meals and your practice. Okay, ideally to be done in the morning, because what Kapalbhati also does is, since we are moving the abdomen, the stomach region, it also increases the metabolism. Okay, so it increases the digestive fire of our stomach. So you should be performing it always before having your meals. Okay, you can do this every morning for cleansing. It is one of the Shatkarms. Okay, so in yoga, we have a concept of Shatkarms. Some of them include Kapalbhati in pranayam, but Kapalbhati is actually a Shatkarm. Why it is so? Because see, pranayam is control of your breath while inhaling and exhaling. While doing Kapalbhati, there is no control of inhalation. Inhalation is passive. When there is active controlling of your breath, which is Purak, Kumbhak and Rechak, it is called as pranayam. So Patanjali ji has clearly identified that this is a Shatkarm. Okay, people have this argument ki Shatkarm hai ya pranayam hai, but if you go to people who follow traditional yoga and the scriptures, it is called as Shatkarm, which is the cleansing techniques. There are 6 cleansing techniques, where Tratak, where you stare to a diya, you all must have seen or heard that, we're staring into a diya for meditation, even that is a Shatkarm. Okay. Okay, how many times to do this? You can do, as a beginner, 20 times, so 20 strokes, 3 times you can do it. With practice, maximum you can go to 120 strokes in one set. Okay, and then you can do 2 to 3 sets. But after 120 strokes, which would be about 2 minutes, okay, because you're doing 1 stroke in 1 minute, you're supposed to stop. Breathe normally for some time and then start with the second set. Okay, Pooja ji? Or any more questions? मैम इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ हाँ मिलेंगी, वो तो मैंने पहले बता दिया, मिलेगी जी। एक्चुअली मैम मुझे ना लीव करना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी आ गई है। हाँ हाँ कोई बात नहीं. Take care and I'll share the recordings. Don't worry. Thank you. No problem. Thank you. Are you okay? Oh, she just left. I don't know. I thought she was crying. I don't know. Yeah. Anyways, moving on, I'll get in touch with her later. She's from my regular classes. I'll ask her. Okay. Next, moving on to Anulom Vilom here. Anulom Vilom is alternate nostril breathing. Now, alternate nostril breathing, why it is important according to the scriptures again. We have the Surya Nadi and the Chandra Nadi. Surya Nadi is the right side of our body, which is dominant, and Chandra is the left. Okay. Now, at one time, hamara ek hi nostril active hota hai. Okay. At one time, only one nostril is active, and our body balances what it needs throughout the day. To understand that, we are going to place the hands just above the upper lip and you are going to exhale. आपको एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा हवा जाती हुई फील होगी और एक नॉस्ट्रिल से कम आती हुई फील होगी. तो जहां से ज्यादा बाहर निकल रही है,
That is the dominant nostril for you right now. That's working. Okay. Now क्या होता है कि अगर शरीर का एक ही तरफ का ज्यादा टाइम डोमिनेट होता है, या तो शरीर आपका बहुत गर्म रहेगा या बहुत ठंडा रहेगा, and there is imbalance in the body and also the hormones. So नाड़ी शोधन helps us balance, क्योंकि हम क्या करेंगे, we are going to control the breath from one nostril and the other nostril here. Okay, so we are going to do left hand से तो ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, which is index and the thumb joining here, hands on the thighs. ठीक है, left hand is fixed here. Right hand से, the right hand में 5 fingers represent the 5 elements in nature. Okay, thumb represents fire, this represents air, this represents space, this is earth, and this is water. Okay, so when we do it with the right hand and the right nostril, which is Surya, we are actually placing fire over Surya. अगर हम left से करते हैं तो क्या होगा, सूर्य over चंद्र आ जाएगा, जिससे हमारे forces opposite हो जाएंगे. ठीक है, so always to be done with the right hand only. हम एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट का कंट्रोल कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू ब्लॉक दीज टू, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर कमिंग एट द बेस ऑफ द थंब. ओके, द अदर 2 फिंगर्स आर गोइंग टू बी रिलैक्स्ड एंड ओपन. थंब हमारे राइट नॉस्ट्रिल पे आएगा. वी आर गोइंग टू इनहेल विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, exhale with the right, inhale with the right, एंड एक्सहेल विद द लेफ्ट. हम हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट पे खत्म करेंगे. ठीक है, ये कहलाता है 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम. वी आर गोइंग टू डू 5 राउंड्स ऑफ दिस. ओके, गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे. कभी कभार टेंडेंसी होती है कि वी बेंड द हेड और टर्न द हेड और गो डाउन. ठीक है, ऑल्सो नॉस्ट्रिल्स को ज्यादा नहीं दबाएंगे, हल्के के दबाने से वो बंद हो जाता है, बहुत हल्का फुल्का है. लेट्स बिगिन हियर विद द लेफ्ट काउंट. प्लीज इनहेल and exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. And for the last time, inhale left. Exhale right. Inhale right. And exhale left. Release the right hand with a couple of blinks. Open the eyes here. Okay. इसके बाद we are going to move on to 2 more pranayams which are left. One is Brahmari pranayam and the next is Ujjayi pranayam. Okay, for Brahmari pranayam is the humming of the bee pranayam. It is used to increase the focus, reduce any tension in the body that we have. Okay, so for that we are going to use the thumb to block the ears, our index finger on the eyebrows just over it, and the other 3 fingers slightly placed over the eyeballs. I'm going to inhale from the nostrils, taking a deep breath in, and exhale from my nostrils only, while making a humming sound of the bee. जो ओम का लास्ट का वाला पार्ट आता है, वो वाली आवाज करते हुए जितना लंबा हो सके वो को मैंने खींचना है. Let's begin 5 times. Please inhale here. One more time, please inhale. Make sure the spine is straight. You are not leaning forward, but your spine is in a straight line here.
3 more rounds here. You can do it at your own pace. Inhaling and exhaling with a humming sound here. Whenever you're done, you're going to rub the palms, cup your eyes, cup your closed eyes. And gently take the hands away. Rub the palms, cup your eyes, blink your eyes a couple of times, and gently take the hands away. Okay. The last pranayam that we can use to relax the vagus nerve and stress is the Ujjayi pranayam. Okay. Ujjayi pranayam relates directly to your thyroid gland. Okay. So thyroid gland, वहां से भी हमारा vagus nerve पास होता है. So जहां जहां से भी vagus nerve हमारा पास होता है, the intention is to do asanas and pranayams that impact the vagus nerve. तो क्या हमारा anti stress जो भी है वो चालू होना शुरू हो जाए. Now for this, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे on your knees. You're going to inhale from the nostrils और आपकी जो सांस है वो गले से लगती हुई नीचे जाएगी. ठीक है. How you're going to do this is, I don't know if Zoom will take this audio or treat it as background noise, but you're going to go like ठीक है. अब ये आवाज आती कैसी है गले से. ठीक है. इनिशियली यू माइट स्ट्रगल, थोड़ी खांसी भी होगी, खराश भी होगी. मिस्टर राधिका जी, आई फॉरगॉट योर नेम. मिस्टर आर, लेट्स जस्ट पुट इट. ठीक है. रोहित और राहुल आई फॉरगॉट, बट फॉर मी इट्स मिस्टर राधिका जी. ठीक है. रोहन. ओके, नाइदर रोहित नॉर रोहन राहुल. ओके फाइन, मिस्टर रोहन. ठीक है. सो yeah so you have cold, so I would ask you not to do. You have cough, so please don't do this. आपको और ज्यादा खांसी आ सकती है. बाकी सब if you're doing normal you can do this. ओके. गले से लगती हुई सांस अंदर जाएगी तो वो कैसे होगा, जैसे आप इचकी लेते हैं. ठीक है. हाउ यू टेक इकअप्स, वैसे ही सांस लगती हुई अंदर जाएगी. ठीक है. इनिशियली वो आपका शायद 1 माइक्रो सेकंड या 2 सेकंड तक ऐसा, हाँ बिल्कुल खांसी आएगी, इसलिए नहीं करना है. ठीक है. ऐसे ही आपने जितनी लंबी ले सकते हैं वो गले से लगती हुई सांस. सो दैट्स टचिंग योर थायराइड ग्लैंड एंड गोइंग इन, बिकॉज नाउ इट्स नॉट यूज्ड टू. तो आपको इनिशियली खांसी आएगी बट धीरे धीरे वो चली जाएगी. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस जस्ट वन टाइम. ठीक है. यू आर गोइंग टू इनहेल, कंप्लीटली सांस अंदर भरेंगे और देन यू गोइंग टू टक द चिन इन, जैसे हमने पहले किया था. और सांस छोड़ते हुए दोनों नॉस्ट्रिल से गर्दन सीधी करेंगे, गर्दन ऊपर ले आएंगे. एंड ब्रीथ नॉर्मली. ठीक है. You can do this 5 to 10 times in a day. It's not a problem. ठीक है. For women specially, दोनों के पास होता है. ठीक है. Men women दोनों के पास थायराइड होता है. डिसऑर्डर्स दोनों को होते हैं. women में ज्यादा दिखता है, ज्यादा पाया जाता है. ठीक है. बट होता दोनों के पास है. ठीक है. Now, having done all the asanas and pranayams for the day, okay, you can also do Om chanting, which all of us know. I'm going to proceed to the ending part of the theory, which is again going to be how to deal with stress. Okay, what are the tactics that we can apply in daily life to deal with stress? Okay, so you can sit in a very relaxed pose. Kursi pe baith sakte hai, tek kar baith sakte hai, because it's going to be theory again. I hope my screen is visible. Okay. So how do you deal with a stressful situation? So remember the 4 A's. So one is you can try to change the situation that you are in. Okay. These things are sometimes not in our hands, but this is the first thing that we're going to try and control. Okay. For example,
अगर कहीं पे मारपीट हो रही है, सबसे पहला है उस सिचुएशन से भाग जाओ, ठीक है, टू अवॉइड द सिचुएशन. सो यू आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन हियर. So first is to avoid that. You are going to learn to say no. Second, avoid people who are causing this stress. फोन ही मत उठाओ, मिलो ही मत, जो भी नॉर्मली आप करते हो, ठीक है. There's nothing new in this. Third is controlling the environment. For example, sometimes even driving in traffic gives us a stress. ठीक है, कि यार बड़ी ट्रैफिक है. Choose a longer route with less traffic. लंबा हो भले कोई नहीं. So control the environment that you are in. That's giving you stress. And the fourth way, which is more important, is to make a to-do list. कभी कभार ना बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ठीक है. तो टू डू लिस्ट बना के मेक अ लिस्ट कि ये चीज मुझे आज नहीं करनी, कौन सी चीजों का टेंशन मैं आज अवॉइड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. सो द फर्स्ट थिंग इज चेंजिंग द सिचुएशंस and we are going to try and avoid it. Second is altering the situation. How do you alter it? You express how you're feeling to the other person if the other person is able to understand and listen. Second is be willing to compromise if things are supposed to change in a particular way. Be okay with it. Be assertive. Be positive about the changes that are going to come. And again, fourth is time management. जब हमारे पास टाइम नहीं होता ना और करने को बहुत सारी चीजें होती है, तब भी होता है. So the first thing is you're going to try and change the situation. अगर सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत टाइम वो नहीं चेंज हो सकता, ठीक है, 90% ऑफ द टाइम्स तो हम नहीं कर सकते. यू आर गोइंग टू चेंज योर रिएक्शन टू इट, हाउ यू रेस्पॉन्ड टू इट, यू आर गोइंग टू चेंज दैट. फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू अडेप्ट. ओके, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट कि जो प्रॉब्लम है वो रहने ही वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है. एंड नॉट ट्रीट इट एज अ प्रॉब्लम बट नाउ लुक एट इट एज समथिंग कि इसका सोल्यूशन निकालना है अभी, ठीक है, कि वो तो रहने वाली है. लुक एट द बिगर पिक्चर. इमेजिन कि आज जो चीज आपको परेशान कर रही है, क्या वो एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद परेशान करती रहने वाली है? इज दिस टेम्पररी और इज दिस परमानेंट? If it is something which is temporary, you know it's just momentarily, it's going to pass away. Then there's no point stressing it about so much. It is just about time then. Once you accept कि हाँ ठीक है, अभी की बात है, एक साल बाद ये चीज मुझे बॉदर नहीं करने वाली है, let go. Adjust your standards. Most of the times हमारा जो disappointments या stress आता है वो because we have certain standards, ठीक है. उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, मैं like we expect our bosses to be in a particular way. कि उसको इतनी भी समझ नहीं है, उसको इतना भी समझ नहीं आया, बिकॉज वी हैव स्टैंडर्ड्स इन आवर ओन हेड कि मैं कैसे उसको समझ नहीं आया. तो वो स्टैंडर्ड्स आपको लो, एडजस्ट या हाई, कम या हाई, डिपेंडिंग व्हाट इज द सिचुएशन इज, वो आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दूसरे वाले की लिमिट ही इतनी है, उसको इतना ही आता है, इससे ज्यादा वो दे नहीं सकता. एंड देन मेक पीस विद इट, ठीक है. फोर्थ इज हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, ठीक है. हमें पता है कैसे लगता है, मतलब इफ यू आर हैविंग अ बैड डे और आपके सामने कोई आपका दोस्त आ गया हु इज हैविंग इवन अ वर्स डे देन यू, तब आपको लगता है हाँ हाँ मेरा दिन इतना बुरा नहीं जा रहा जितना उसका जा रहा है, ठीक है. सो इवन विदाउट दैट हैपनिंग, हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू व्हाट यू हैव. हमेशा कोई आपको बार बार ये बोले कि तुम्हारा तो फिर भी अच्छा चल रहा है, मेरा तो और भी बुरा चल रहा है, और आपको तसल्ली हो कि हाँ उसका बुरा चल रहा है, बढ़िया, मैं तो सेफ हूँ, ठीक है. So don't do wait for that, but practice gratitude yourself, because all of us are today somewhere, if not 100%, but at least 60 to 70% of what we were dreaming of 5 years back. 5 साल पहले जो आपके सपने थे, जो आपके गोल्स थे, if not 100%, you're 50, 60 or 70% there already. So be grateful, okay, कि चल रहा है. And also be grateful कि आपकी और मेरी सांसें चल रही है, ठीक है. आई मीन दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू एंड आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर. हाथ पैर चल रहे हैं, सारे सेंसेस चल रहे हैं, ठीक है. वी आर जस्ट ब्लेस्ड टू हैव दैट. लास्ट इज वही रिपीट, लर्न टू नो व्हाट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. सामने वाला इंसान है ही ऐसा तो है ही ऐसा. आम के पेड़ से आम ही आ सकते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वाटरमेलन फ्रॉम अ मैंगो ट्री, ठीक है. सेकेंड इज व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. इट ओनली लाइक स्ट्रेस, इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, इट विल ओनली मेक यू अ बेटर पर्सन. आपकी पूरी लाइफ में वॉट एवर यू आर टूडे हैजंट बीन अ स्मूथ सेल, ठीक है. आपने अपने चैलेंजिंग सिचुएशन से ही इवॉल्व होकर सीखा है. सो वॉट एवर गोइंग थ्रू टूडे इज गोइंग टू मेक यू बेटर टुमारो. नेक्स्ट इज लर्न टू फॉरगिव. दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है. हमें हल्का महसूस होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ टू डील इज द 5 R's. इफ द 4 A's डोंट वर्क,
go to the next 5 hours. Option 2, one is rethink कि आपको जो problem है, is it worth stressing for? ठीक है. दूसरा, reduce contact or the time that you are spending on that issue together. ठीक है. दूसरी चीजों को लेके, हाँ वो issue है, but साथ में और कौन सी चीज है issue, वो कीजिए. Relaxation and release come together because you can do this by moving the body. ठीक है. अपने वेगस सिस्टम को अपना रिलैक्स करो, ब्रीथ करो. लास्ट इज रीऑर्गेनाइज. राइट डाउन एवरीथिंग, मेक अ टू डू लिस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें से क्या प्रायोरिटी है. मतलब मुझे अगले एक हफ्ते में कौन सी आग लगी है, कौन सी चीज को पहले डील करना है, किसको पहले बुझाना है, फिर कौन सी चीज बुझानी है. सो इफ यू आर अ फायर फाइटर और 50 बिल्डिंग में आग लगी है, यू गोइंग टू प्रायोरिटाइज ना, पहले किसको बुझाओ. इफ यू आर कोस्ट गार्ड, 50 लोग डूब रहे हैं, पहले किसको जरूरत है बचाने की. वैसे ही लाइफ में सिचुएशंस की पहले कौन सी आग बुझानी है, पहले कौन सी चीज को पकड़ना है, वो करते हुए देन यू आर गोइंग टू डील विद दी rest. But it's very important to rethink what you're going through. Is it momentarily, is it permanent? Reduce the time you are giving to it. ठीक है. पकड़ लीजिए, चलो आधा घंटा का टाइमर लगा लीजिए कि आधा घंटा आई एम गोइंग टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस. उसके बाद दूसरी चीजें है, उसमें आपने स्विच करना है. रिलैक्स एंड रिलीज, यूज टेक्निक्स एंड देन रीऑर्गेनाइज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर. ठीक है. लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या लाने हैं? मूव योर बॉडी, हेल्दी चीजें खाइए. वॉट एवर यूर ईटिंग, उसमें सोचिए इसमें मुझे कौन सा विटामिन मिल रहा है, इसमें मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. ठीक है. अगर सिर्फ तेल तेल मिल रहा है और ट्रांस फैट मिल रहा है जिससे आपको बीमारी होगी तो कोई मतलब नहीं है. रिड्यूस कैफीन, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगर इनटेक एंड चॉकलेट. वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइड यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स and get a good sleep. A good sleep is very, very important. It reboots our system immensely. ठीक है. So with that, if you have any questions, you can shoot away. I hope I was able to explain you the theoretical and the practical aspects of why you should be doing certain things, which is very, very important. Okay. If you have any questions, you can shoot them my way. I would be more than happy to answer them. Okay. Otherwise, the session has concluded. We are going to chant Om 3 times and you can ask me questions. You will be joining our hands in prayer position near the chest. Closing the eyes here. Please take a deep breath in. Om. One more time. Inhale. Om. And one last time. Please inhale. Om. Kindly rub the palms here. Cup your eyes. Blink your eyes a couple of times and gently take the hands away. Thank you for your grace, presence, patience, and time. Thank you for being here. Have a great evening, great day, great Sunday. And those who want to leave can leave. Those who want to ask can ask me questions. Any questions? Thank you, ma'am. Anji. You're most welcome. Any questions? Okay, chalo. Bye bye. Take care. Have a great day.